Hello, good afternoon to all of you. We started this polity related lecture series on the Unacademy platform. We started with the historical evolution of our constitution. Then again we moved to the constitutional amendment, how constitutional amendment has taken place. Then we discussed the basic structure doctrine. Then we discussed the federal structure of our polity, our Indian nation. Then last time we discussed the governor related aspects. What are the controversies related to governor, and what is the issues and what the different commission has recommended for the changes for the governor as an institution. Okay, so in this lecture we will move forward to discuss the state government. State government कैसे होता है, उसके functions कैसे होते हैं, then how the state legislature assembly does. So उसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट. So we'll start today's lecture on Unacademy platform. Okay, crack UPSC CSE exam with us. And Unacademy is providing one of the largest learning platform to crack the UPSC civil services for 3 stages of UPSC, that is the prelims, mains और interview के हिसाब से. तो if you want to get the subscription, you will be given the daily live classes, daily test series are also there, the quiz series are also there, in the structured courses mean the focused courses, जैसे कि आंसर राइटिंग के कोर्सेस हो, जैसे कि ऐसे राइटिंग के कोर्सेस हो. देन यू विल बी गाइडेड विद द पर्टिकुलर ऑप्शनल रिलेटेड सब्जेक्ट. सो it will provide the unlimited access. They have also introduced the Unacademy learning app. You can download that learning app and you will be available to many large related knowledge base provided by the Unacademy. So before that, I will introduce myself. I'm Aniket. I have given the 5 mains in the UPSC civil services, appeared in the 2 interviews also. I did my post graduation in the biotechnology. I have a 2 years of DBT JRO fellowship and more than 3 years of experience of teaching and the different institutes, जैसे कि पुणे में भी पढ़ा चुका हूँ और दिल्ली में भी पढ़ा चुका हूँ. So if you have any doubt regarding this lecture or regarding your preparation, you can directly text me. You can join my Telegram channel, that is the UPSC Aniket. Okay, so there are number of different educators which are providing the knowledge base on the Unacademy platform. If you want to join, more than 16,000 courses are going on. जैसे कि पॉलिटी के कोर्सेज चल रहा है, then history related courses are there, then current affairs, then polity के, और हमने लगा जैसे कि आंसर राइटिंग के भी courses are going on. If you want to get subscription, there is a flexibility available, means you can go for 1 month of subscription also, or you can go by the 1 year of subscription. उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. Then you can go for either iconic subscription or the plus subscription. Plus subscription में regular courses है, जैसे कि structured है, live classes are there, then the daily mains answer writing के भी practices चल रही है. Again, if you want to join the iconic courses, जैसे कि personalized learning के courses होते हैं, तो if you use the code that is the Aniket as a referral code, then you will get a 10% of discount on your basic fee, right? So please अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए, और आप खुद अगर सब्सक्राइब करना चाहोगे तो आप प्लीज यूज Aniket as a referral code to get a 10% of discount in either in the plus courses, also in the iconic course like mentor appointed courses. Okay, so we'll start today's lecture. कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे. Okay, good afternoon to all of you. Okay, we will start today's lecture, that is the state government. First of all, we will discuss what is the history behind it, right? State government तो है, as we all know, India is a federal country, right? Federal country, so it will have a central government as well as state government. Central government is headed by head of the state is president, right, which is considered as a de jure authority. De jure means उनके पास कोई responsibility नहीं है, it's considered as a nominal, right? And the de facto authority means real authority resides in the council of ministry, which is headed by the prime minister. Okay, this is for the center, right? And at the state level, the head of the state
head of the particular state is governor. Okay, head of the state is governor, which is considered as a de jure, means nominal उनके पास कोई authority नहीं है, he is just a nominal head of the state, but the real authority, that is the de facto authority, is under the Council of Ministry, which is headed by the Chief Minister. Okay, so as we have discussed last lecture, we have discussed how the governor institution has been evolved, right? So we'll start today's lecture with the history. As we all know, the history started with the presidencies. State governance का जो historical background अगर देखें तो ब्रिटिश प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो ब्रिटिश ने presidencies बनाई थी गवर्नेंस के लिए. Presidencies was there earlier, like Bengal presidency was there, then the Madras presidency was there, then again the Bombay presidencies was there. So we can say the origin of provincial government is related with the rise of presidencies in the British प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो प्रेसिडेंसीज थी उनके यहाँ पे हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देख सकते हैं, राइट? सो अगेन विथ एक्ट ऑफ 1861 एक्ट्स में क्या था कि द लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हैज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. मींस इस प्रेसिडेंसीज को दे डिवॉल्व दिस legislative function to these presidencies. Okay, so presidencies can make their own laws. Started with the 1861, right? Again, what they have did in Act of 1999 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, गवर्नेंस ऑफ इंडिया का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था. what they have done by this act is that they introduced the diarchy system in the provinces में उन्होंने diarchy system का introduce किया. So what was the diarchy system? Diarchy system means they have differentiated the subject list को उन्होंने differentiate किया था. The first subject list, which is administered by the governor, right? Governor administer करता था, और the second subject list is administered by the Council of Ministry, which was elected. So this devolution started, or the governance of presidencies or governance of state government का जो evolution हम देखेंगे, so that can directly relate with the Government of India Act in 1991. वहाँ पे कुछ autonomy दी गई थी. They introduced the portfolio system. They introduced the Council of Ministry system at the provincial level. Okay, you can ask me any doubt if you have. कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. सॉरी. अगेन दिस इन 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 1935 एक्ट था, दे हैव गिवन द फुल autonomous status to the provinces को full autonomous status दिया गया by the British. Okay, so whole subject list administration is given to the Council of Ministry, which was elected. Again, there was an institution of governor institution was there by the 1935 Act. So in the Constitution of India, which continued the federal polity of British government, federalism की जो polity थी वे continued की. तो state government जो origin है, we can say that borrowed from the 1935 Act. 1935 Act का जो Council of Ministry को जो autonomous status दिया गया था, autonomy दी गई थी, that continued in the new constitution. Okay, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. All the state government can function within their list, no particular list, that 7th
7th schedule had differentiated the subject list, right? सो सेंटर की जो सब्जेक्ट लिस्ट है वहां पे सेंटर लॉ बना सकता है, अगेन द स्टेट की सब्जेक्ट लिस्ट है वहां पे स्टेट लॉ एक्ट बना सकता है. सो दिस इज मेजर डिफरेंशिएशन ऑफ फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म अगर हम कहेंगे तो दे हैव गिवन द सेपरेट लिस्ट फॉर अ स्टेट एंड सेपरेट लिस्ट फॉर अ सेंटर. ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. (371) का जो स्पेशल स्टेटस विच हैज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफरेंट स्टेट्स, राइट, it is by the constitution, under the constitution. It was not again in the 1935 के एक्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, वो जो डिफरेंशियल स्टेटस था वो नहीं था, मगर जो इनर लाइन परमिट थे, जैसे कि उनको सेपरेटली गवर्न किया जाता था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, तो इनर लाइन परमिट जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स थे दैट हैज बीन फॉलोड बाय द ब्रिटिश फॉलो करते थे वो, राइट. ट्राइबल एरियाज को गवर्न करने के लिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा गवर्नेंस एक्टिविटीज की थी, उसमें आता है इनर लेवल पर इनर लाइन परमिट का, तो वहां पे वो डिफरेंस आ जाता है. तो वी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज दीज प्रोविजंस, जैसे कि इन आर्टिकल 371 में कुछ प्रोविजंस, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी to the state governments, right? So these came under this constitution, our constitution, not given by the Britishers. Okay, so we'll start today's lecture, that is a historical evolution of state governments, right? So we will start with today's lecture. As we have all know, the state executive is made up of a governor and council of ministers, right? council of ministers बनाते हैं state executive and the governor बनाते हैं. तो as we all yesterday's classes we discussed the how the institution of governor has been established. governor की institution establishment हमने देखी, then उसकी we discussed about the structure, we discussed about the governor's function. Okay, so in this lecture we will discuss the council of ministers. state government के जो council of ministers होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका appointment कैसे होता है, and how this established, how appointment उसका कैसे होता है, powers उनकी कौन सी हैं, and how they functions, right? Okay, the first important minister in the council of ministry is the chief minister. Okay, the real executive head, the real head of government, real head of government is a chief minister, right? So this is a governor is a nominal authority, and de facto authority is given to the council of ministers, which is headed by the chief minister, right? ये important है कि रियल अथॉरिटी किसके पास है, एंड डी फैक्टो डी जूरे अथॉरिटी मीन्स गवर्नर इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉमिनल, वो सिर्फ स्टेट के हेड होते हैं, और आइदर जो फंक्शनल अथॉरिटी है, फंक्शनल अथॉरिटीज रिजाइड्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, देन हाउ द अपॉइंटमेंट हैज बीन डन, how the council of minister get appointed. So appointment procedure is done by under article 164. Article 164 states that there should be council of minister to aid and advise governor. गवर्नर के लिए एड एंड एडवाइज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए. दिस इज गिवन अंडर द आर्टिकल 164. Okay, so council of minister is appointed by the governor. governor appoint करता है उनको council of minister को. कहां से? from the majority, the party which forms the majority would stake claim for the government. गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी वो गवर्नर के पास क्लेम स्टेक करेगी. तो यहां पे अगर हम देखें तो here governor has given some situational discretion, right? situational discretion है गवर्नर के पास. when it came situational discretion मतलब वो अपने खुद की जो आइडियाज है खुद वो फंक्शन कर सकता है.
इसको कहते हैं हम सिचुएशनल डिस्क्रिशन, वेयर इफ नो पार्टी इज एबल टू फॉर्म द मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिली, तो ऑब्वियसली गवर्नर क्या करेगा, वो खुद की जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, वो खुद की जो सोच है, उसके हिसाब से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही विल डू हियर, he will he will invite the majority party जो है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट उसको मिला है, उनको इनवाइट करेगा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और अगेन और इफ मेजॉरिटी पार्टी इज नॉट देयर, ही विल इनवाइट द लार्जेस्ट कोalition गवर्नमेंट। जो लार्जेस्ट कोalition है, प्री इलेक्शन कोalition है, उनको ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिले हैं, तो उनको इनवाइट करेंगे गवर्नर टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अगेन यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हुई थी। इफ यू से द गोवा, टेक ए एग्जांपल ऑफ गोवा में क्या हुआ था, गोवा इलेक्शन विच टेक प्लेस, कांग्रेस हैज गॉट द largest number of seat and BJP has got the second largest of seat. Okay, so what governor has did is he invited the BJP party to form the government. Okay, so this is not a conventional, this is the only convention has been established, that to invite the majority party to form the government. But again, the governor has his own thoughts, his own discretion, so he invited, in many number of cases he invited the second party to form the government. ये यहाँ पे कुछ deficiencies है, right? Again, the governor can also ask any person, can appoint any person as a chief minister and can give him 1 month of period to show the majority in the parliament, state legislature. So this is also important. The governor can appoint any candidate as a chief minister and give some specific time, that is the 1 month, to show its majority in the state legislature. Or here governor can also appoint person who is not member of either state legislature का मेंबर है नहीं, और जो काउंसिल का भी मेंबर नहीं है, मतलब स्टेट वो इलेक्टेड नहीं है, फिर भी गवर्नर कैन अपॉइंट some that person as a chief minister and give him reasonable time to show his majority, right? Okay, गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है as a chief minister, either he from a state legislature, either he from a council, or either he is not member of any state any legislature, मतलब वो काउंसिल के भी मेंबर्स नहीं है और वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं, तो उनको भी वो अपॉइंट कर सकता है। एंड ही कैन गिव हिज रीजनेबल टाइम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर। सो उसके में क्या होगा, आइदर वो पर्सन, इफ पर्सन इज नॉट मेंबर ऑफ एनी, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है वो, और आइदर काउंसिल के भी मेंबर नहीं है, तो ही हैज अ 6 months period to get elected either from the state assembly or either from a state council. So state council और state assembly से उनको 6 months के अंदर elect होना पड़ेगा. So this is the appointment procedure for the council of ministry or the chief minister. Okay, chief minister की appointment procedure हमने देखी. So constitution has not given any single direction to whether to whom to appoint the chief minister. Okay, so this convention has been formed that the chief minister is appointed by the governor whether he is not a member of any legislature, right? legislature के कोई member नहीं है तो उनको भी appoint कर सकता है, और he can give him the reasonable time to prove his majority in the state legislature. Okay, ये हो जाएगा. और again either he is a member of state legislature और state council के member हो. अगर वो member नहीं होंगे state legislature के, तो either he has to get elected either from the state legislature or the state council within a 6 months of period, right? यहाँ पे गवर्नर का रोल बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है और गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है if there is a no single party which forms the majority. अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो यहाँ पे
गवर्नर को एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन आ जाता है। अगर कोई पार्टी अगर मेजॉरिटी फॉर्म करती हो या कोई पार्टी इफ its coalition is there who forms the majority, then again the governor का रोल है वो restricted हो जाता है। he can invite the largest party or the largest coalition, but again this is an exception. Governor can act on his own advice, right? गवर्नर को सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, गवर्नर कैन इनवाइट एनी अदर पार्टी। जैसे कि हमने देखा कि गोवा में हुआ था, what happened in Goa is that the Congress government has a majority, but governor has invited the BJP party to form the government. Okay, so this is most important if you are studying the appointment of chief minister, the role of governor, right? Then again we will discuss the function and powers of chief minister. Chief minister के कुछ function और power हम उससे discuss करते हैं। As we all know, chief minister is head of the government. He is a head of the government, so he advises the governor to whom to appoint as a minister. वो गवर्नर को मिनिस्टर अपॉइंट करने में, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाने में एडवाइज करते हैं, और उनके एडवाइस पे ही गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। Function of and power of chief minister. Again, he has a power of allocation of business among the council of minister. मतलब किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, जैसे कि whether you have to whom you have to give the finance ministry or whom you have to give the home ministry. रूरल डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो किसको देना है, तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द चीफ मिनिस्टर, राइट? चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किसको कौन सा खाता देना है। Allocation of business is done by the governor on the advice of chief minister. So this is second most important function. Then the third important function is that he can dismiss the ministers. So he can directly advise the governor. Governor has a power to dismiss the minister. So चीफ मिनिस्टर एडवाइजेस द गवर्नर के इस मिनिस्टर को निकाल देना है या इस मिनिस्टर से ये खाता दूसरे मिनिस्टर के पास ट्रांसफर करना है। तो ऑब्वियसली गवर्नर कैन ओनली डन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट डायरेक्टली यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, राइट? ओके, सो दिस इज फंक्शन। अगेन द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन which is given to the chief minister is that under article 167 he has to communicate the information। जो कैबिनेट में या कुछ जो मेंबर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में कोई डिसीजन हुआ हो तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, if asked by the governor or not asked by the governor, he has to communicate that information to the governor। ये important role है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के लिए और चीफ मिनिस्टर के लिए, राइट? इट्स केम अंडर द आर्टिकल 167। ओके, सो द अनदर फंक्शन इज दैट ही कैन एडवाइज द गवर्नर टू अपॉइंट, जैसे कि एडवोकेट जनरल का जो अपॉइंटमेंट है, जो स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है स्टेट के, उनका जो अपॉइंटमेंट है, देन हेड ऑफ द स्टेट पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अपॉइंटमेंट्स है, which is done by the chief minister's advice, right? So this is also the important role played by the chief minister. Again, other जो informals role होते हैं, जैसे कि earlier there was a planning commission, so he is represented in the planning commission. Again, he represents the state in the नीति आयोग। रिसेंटली नीति आयोग जो फॉर्म हुआ था तो उसमें भी चीफ मिनिस्टर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देन इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है, इंटर स्टेट काउंसिल, उसमें भी चीफ मिनिस्टर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगेन स्टेट प्लानिंग कमीशंस जो होता था तो उसके भी चेयर होते हैं। देन नेशनल डिजास्टर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी होती है उसमें भी चीफ मिनिस्टर ही हेड करते हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ फंक्शंस एंड पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राइट? चीफ मिनिस्टर इज अ रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को भी रिजाइन करना पड़ेगा। सो ही इज कंसिडर्ड एज अ लिंचपिन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट।
ओके, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. So how the chief minister functions, how the chief minister get appointed, and how the chief minister has a power and how he functions, this is most important, right? State PCS में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं और either UPSC can ask question from this topic. Okay, okay, कोई डाउट होगा तो you can ask me directly, right? Then we will move to the council of ministry. Okay, the council of, हमने देखा कि Chief Minister has an important role to play in the appointment of Council of Ministry. Chief Minister advises Governor to appoint the Council of Ministry on his own discretion. Right? Chief Minister select करेंगे Council of अपनी खुद की Council of Ministry. Okay, then he allocate the business of Council of Ministry. So this came under the appointment process. Appointment of Council of Ministry came under the Article 163 and 164. What Article 163 in 164 states that there should be Council of Ministry to advise the Governor, right? Governor को advise करने के लिए Council of Ministry होनी चाहिए. Again, Council of Ministers are there, depends upon the pleasure principle of Governor. Governor की pleasure पे ही उनका tenure depend है. तो this is most important nature of Council of Ministry. Means Governor can either appoint or remove the Council of Ministry or whether single ministry on his pleasure, right? So this pleasure doctrine is also important, but pleasure doctrine is not arbitrary, right? Means this appointment and removal is done by on the advice of Chief Minister. Okay, so this is also important. Again, the Article 164 state that Council of Ministry is collectively responsible to state legislature. State legislature को एक collectively responsible है. So either vote of confidence जो होगा, तो vote of confidence जो state legislature में आता है, तो these came under the collective responsibility of state legislature. Council of Ministry की जो collective responsibility है वो state legislature के पास है. तो either state legislature can pass the vote of no confidence or no confidence. तो उसके बाद जब no confidence का वोट पास हो जाएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा. सो दीज केम अंडर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. Again, there is individual responsibilities also there. Individual responsibilities also came under the Article 164. So, Council of Minister is individually responsible to the governor, right? So, governor can either appoint and remove that particular minister on the advice of chief minister. तो वो individual responsibility के अंदर आता है. So, Council of Ministry की two responsibilities होती है. Either is a collective responsibility and it is a individual responsibility. So collectively it is responsible to the state legislature and individually it is responsible to the governor. So this is most important thing, the responsibilities of Council of Ministry. Okay, if you have any doubt direct you can ask me directly, right? Again, so this is the important appointment procedure. Appoint कहाँ से होती है? तो there are some states like state of Jharkhand, then state of Odisha, then state of Madhya Pradesh, where number of tribal population is very large. Okay, so what constitution has stated that there should be tribal minister within the Council of Ministry. Council of Ministry में ट्राइबल मिनिस्टर होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है. सो आइदर स्टेट, मतलब कि बिहार ले लो या यूपी ले लो, वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो
there is no mandatory to appoint the tribal minister in that particular state. But Jharkhand हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, where very large tribal population is there, so there should be tribal minister to represent the tribal population. Okay, so this is also important. Then there is again one amendment is there, 91st constitutional amendment, which is passed in the 2003. What it states that the size of council of ministry should be 15% of the size of state legislature. Okay, only 15% should be appointed as a minister in the council of ministry. Okay, but the minimum council of ministry's size should be 12. Okay, there should be 12 ministers in the council of ministry. Okay, we will discuss the Panchayati Raj will also be discussed by me in the next lecture, right? So we are moving with the continuous, मतलब जो सब्जेक्ट है पॉलिटी के उसके हिसाब से देखें. उसके बाद हम जुडिशरी की डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पंचायती राज भी डिस्कस करेंगे, राइट? सो बाय द 91st constitutional amendment, there is a putting limitation has been put that the only 15% of size of council of ministry should be 15% of state legislature. Again, the minimum size of council of ministry should be 12 only. So this is most important constitutional limitations provided on the size of council of ministry. So ये important है, ये चीज़ों को हमें बहुत importantly समझ लाना चाहिए कि कौन से स्टेट में ट्राइबल मिनिस्टर्स होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की साइज कितनी होती है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बताया गया है. सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट facts related to council of ministry. Okay, so if we discuss the functions of council of ministry, as we have seen under the article 164 is what it says. Yes, we are taking this classes on daily basis at the 12:30 को होती है हमारी ये क्लासेस 12:30 PM को. वी आर टेकिंग द डेली क्लासेस ऑन द डिफरेंट अबाउट द पॉलिटी लेसन्स एंड पॉलिटी के शेड्यूल के हिसाब से मैंने ये क्लासेस ये की है. तो उसके हिसाब से वो वी विल टेक टॉपिक्स ऑन द पॉलिटी एंड विल स्टार्ट लेक्चर्स. ओके, so function of, as we have seen, the council of ministry is appointed to aid and advise the governor. Okay, council of ministry is there to aid and advise the governor. So different portfolios के allocations के बाद portfolio जो allocate हो गए, जैसे कि home ministry allocate हो गई, then rural ministry allocate हो गई, then ये finance ministry allocate हो गई, तो number of council of ministers will head that particular division, right? So ये functions में आता है. These are the function of constitutional council of ministry, which is headed by the chief minister. So this is most important regarding the functions. So different minister will head at different portfolios. The like commerce ministry will be there, then home ministry will be there, then finance ministry will be there. Then the ministers has a particular responsibility for that particular minister and department, right? So these came under the function. तो उस department में जो aid and department के लिए जो चाहिए होता है, उस जो decisions है, which came under the minister's function. So these is most important functions to aid and advise the governor. और council of ministry के जो functions है वो यहाँ पे डिस्कस हो जाते हैं. उनके यहाँ पे वो पोर्टफोलियो एलोकेशन के बाद वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. देन अगेन, एज वी हैव सी द अर्लियर, वी हैव अ फेडरल पॉलिटी, राइट? इंडिया हैज अ फेडरल पॉलिटी. तो सेंटर्स लेजिस्लेटिव असेंबली इज मेड अप ऑफ लोकसभा and Rajya Sabha. Okay, so this replicated like this bicameralism
bicameralism, okay, means separation of councils, separation of legislative councils. जैसे कि एक लोअर हाउस बन जाता है उसमें और अपर हाउस बन जाता है. As we have all seen that this started in the 1999 Act, right? At the provincial level, bicameralism जो है वो सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे 1999 एक्ट में वो सेंटर में एस्टैब्लिश किया था बाइकैमरलिज्म, where the legislative assembly get bifurcated in the upper house and lower house. Okay, though these bicameralism again transferred to the provincial, province में भी उसको उन्होंने एक्सटेंड किया by the 1935 Act. So again, in the constitution has continued with the bicameralism को जो continued किया था at the state level, central level पे, central level they continued with the bicameralism, okay. But at the state level, constitution has given option, कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पे स्टेट को ऑप्शंस दिया है कि वेदर यू कैन आइदर गो फॉर बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर, मींस अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और यू कैन बी अ सिंगल हाउस लेजिस्लेचर ओनली. ओके, व्हाई इट इज हैज गिवन? बिकॉज some states were poor. दे कैनॉट अफोर्ड नहीं कर सकते अपर हाउस को जो मेंटेन करना हो तो इट विल रिक्वायर द मनी, एंड सम स्टेट डोंट हैव एनी मनी एट दैट टाइम. सम स्टेट हैज अ वेरी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज, ओके. सो ऑब्वियसली दे हैव इट मेड एज ऑप्शनल एट द स्टेट लेवल. बाइकैमरलिज्म is made optional at the state level, okay. So article 169, by the article 169, the state legislature can appoint either upper house को वो मतलब council को वो establish कर सकते हैं. We will discuss it. So constitution has not taken the mandatory that whether a state should go for a bicameral legislature. So state it given the options to the state. Option दिया हुआ है state को that either you can go for a bicameral legislature or you be having the single legislature, okay. So this is also important. So we will discuss how the state legislature is works, right? So as कोई doubt just okay. So we have here in the daily classes, right? So where we have that we are discussing, we started to discuss how the constitution has given the optional that the either state can have a bicameral legislature or state can have the single legislature. Though organization, if you say the organization of state legislature, you can find the differences. Some state has a two legislative chambers at the state legislature and state council, right? So the bicameral legislature है you can find in the 6 states. 6 states है जैसे कि यूपी है, बिहार है, then महाराष्ट्र है, then कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, and तेलंगाना है. So these states have the bicameral legislature, means they have a upper house and lower house, while the remaining states has a only single legislature. Single legislature, that is the lower house. Single legislative assembly है उनके पास, और जो 6 states है वहां पे bicameral legislature है, जो यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, which have the bicameral legislature, okay. तो यहाँ पे
if you see the organization, again the state legislature, if you see the state legislature is for the 21 स्टेट में एक सिंगल लेजिस्लेचर है, स्टेट काउंसिल है वो 6 स्टेट में हो। सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे हमें डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे, मतलब कुछ स्टेट के पास सिंगल लेजिस्लेटिव है, कुछ स्टेट के पास 2 लेजिस्लेचर है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, इफ यू डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड द स्टेट काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो मिनिमम नंबर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हैज गिवन द लिमिटेशन, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली शुड हैव minimum 60 members or maximum 500 members. This is most important limitation. Number, how many members should be there, the limitation has given by the constitution, within the constitution only, right? So यहाँ के अगर देखें तो minimum number of legislature कितने होंगे, 60 होंगे, और maximum उनकी लिमिट कितनी होगी, 500 तक होंगे। So यहाँ पे भी कुछ exceptions है। So these are the elected members, right? तो डायरेक्टली इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर का होता है, स्टेट का जो लोअर हाउस है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और जो कुछ स्टेट्स है यहाँ पे एक्सेप्शंस अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, देन अगेन सिक्किम, देन अगेन गोवा, वहां पे आपको 30 लेजिस्लेचर की ही असेंबली मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन उन स्टेट्स का कम है, इसलिए वहां पे नंबर ऑफ लेजिस्लेचर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ओनली 30, राइट। पर यहाँ पे मिजोरम की अगर बात करें तो वहां पे 40 लेजिस्लेचर मिल जाएंगे। अगेन नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे 46 लेजिस्लेचर मिल जाएंगे। तो सो कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो लिमिट दिया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि minimum number of legislature should be 60 and maximum number of legislature should be 500, okay, but there is a some exceptions, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में है, गोवा में है, वहां पे आपको 30 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाएगी। मिजोरम में अगर देखें तो वहां पे जस्ट 40 लेजिस्लेचर आर देयर। अगेन द नागालैंड इज देयर, नागालैंड में 46 मेंबर है। अगर हम इफ वी कंपेयर द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल अदर स्टेट लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड रहते हैं, और एक जो है एंग्लो इंडियन मेंबर है वहां पे एक है वो नॉमिनेटेड रहता है बाय द गवर्नर। ये आपको कंपोजिशन मिल जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर का। बट इफ यू गिव मिजोरम और नागालैंड और सिक्किम की बात करें तो देयर आर सम लेजिस्लेचर्स विच आर नॉमिनेटेड, राइट। सिक्किम में अगर बात करें तो सिक्किम में क्या है, सिक्किम में कुछ लेजिस्लेचर नॉमिनेटेड है बाय द बुद्धिस्ट संघा। सो हियर इज द असिमेट्रिक फेडरलिज्म। असिमेट्रिक फेडरलिज्म की हम अगर बात करते हैं, सो डिफरेंट स्टेट हैज इट्स ओन डिफरेंट लेजिस्लेचर। कुछ यहाँ पे नॉमिनेटेड है, कुछ यहाँ पे इलेक्टेड है, कुछ यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो गवर्नर उनसे उनको नॉमिनेट करता है फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। जैसे कि सिक्किम में बुद्धिस्ट जो संघाज है वहां से कुछ इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं स्टेट असेंबली में। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, कैसे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर कंपोजिशन डिफरेंट है, डिफरेंट कंपोजिशंस आर देयर, ओके। और जो स्टेट वहां पे काउंसिल है, स्टेट की काउंसिल है, अपर हाउस है, वहां पे भी आपको अलग चीजें दिखाई देगी। जैसे कि देयर आर दीज स्टेट काउंसिल्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जब हम अगर कंपोजिशन देखें या नंबर ऑफ कितने सीट चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड लिमिटेशन इज दैट द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल, स्टेट के जो काउंसिल के नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 1/3 होनी चाहिए असेंबली के साथ। असेंबली वाली जो मेंबर है, जैसे कि सपोज 100 मेंबर्स है, एमएलएज है असेंबली में, तो उसके वजह से 33 मेंबर की ही स्टेट काउंसिल बनेगी, मतलब 1/3 ही मेंबर्स होंगे स्टेट काउंसिल में।
इन कंपैरिजन टू असेंबली। तो असेंबली को नंबर ऑफ एडवांटेजेस दिया गया है स्टेट काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट में भी। ओके, ये समझ में आ रहा है। जबकि स्टेट असेंबली, इफ यू स्टेट असेंबली है 100 मेंबर की असेंबली है, तो उसकी काउंसिल कितनी बनेगी, 1/3 से बनेगी, मतलब 30%, 30 मेंबर ऑफ लोकल के जो MLAs होंगे अपर हाउस में रहेंगे 33। सो दिस इज एग्जाम्पल, देर आर नंबर ऑफ वेरिएशन, नंबर में वेरिएशंस है बहुत सारे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट काउंसिल की, तो उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है। तो 1/3 जो उसके मेंबर्स हैं विच इज इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज जो है जैसे कि PRIs जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, तो उससे उनका वो इनडायरेक्टली इलेक्शंस होता है। जो लोकल मेंबर्स है लोकल बोर्ड के या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, वो 1/3 मेंबर्स को स्टेट काउंसिल के इलेक्ट करते हैं, राइट। अगेन द 1/3 इज इलेक्टेड बाय द MLAs, जो स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स है वो 1/3 मेंबर्स को स्टेट काउंसिल के इलेक्ट करते हैं। देन अगेन द 1/12 मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रेजुएट्स, जो स्टेट के ग्रेजुएट्स हैं उनको यहाँ पे 1/12 पे इलेक्टेड होना पड़ता है। देन अगेन 1/12 मेंबर्स विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द टीचर्स, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उससे वो 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। उसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स है they cannot be participated, they cannot be get elected, only the teachers which are secondary level के जो टीचर्स है और अपर जो प्राइमरी टीचर्स है वही यहाँ पे इलेक्ट हो जाते हैं, राइट। एंड द रिमेनिंग जो मेंबर्स है स्टेट काउंसिल के, हम बात कर रहे हैं स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो 1/3 कौन इलेक्ट करते हैं, जो लेजिस्लेचर ही इलेक्ट करते हैं। देन अगेन 1/3 इज इलेक्टेड बाय द PRIs और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जैसे इनडायरेक्ट होते हैं। देन अगेन द 1/12 इज फ्रॉम द टीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वहां से इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ टीचर्स ही वोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड बोर्ड के मेंबर्स है वही इलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे MLAs ही वोट कर सकते हैं। अगेन 1/12 मेंबर इज केम फ्रॉम द ग्रेजुएट्स जो होते हैं स्टेट्स के, वही यहाँ पे वोट कर सकते हैं, राइट। अगेन देयर आर सम नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द गवर्नर, कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स है जैसे कि साइंस के फील्ड से या आर्ट के फील्ड से या सोशल सर्विस के फील्ड से कुछ पर्सन्स है, उनको नॉमिनेट कर देता है। अगेन इफ यू कंपेयर द राज्यसभा नॉमिनेशन, हियर वन ऑफ important category has been added, that is the persons from the cooperative institution can also be nominated at the state council। ये जो प्रोविजन है कोऑपरेटिव के मेंबर्स को लोअर हाउस में नॉमिनेट करने की, वो आपको सेंटर में नहीं दिख पाएगी। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड द स्टेट लेवल के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको डिफरेंस मिल जाएगी, राइट। ओके, हमने देखा कि कैसे स्टेट काउंसिल को नॉमिनेशन या इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। देन इफ यू डिस्कस द ड्यूरेशन ऑफ दिस लेजिस्लेचर एंड स्टेट काउंसिल, हम अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो ड्यूरेशन हैज बीन गिवन, दैट इज द 5 ईयर ड्यूरेशन हैज बीन गिवन, राइट। ओके, तो उसके बाद अगर कोई ये है मतलब इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, तो स्टेट के लेजिस्लेचर है उनका जो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज अंडर द इमरजेंसी सिचुएशंस, देयर पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, जो नॉर्मल पीरियड है वो 5 ईयर का है। आफ्टर 5 years देयर शुड बी न्यू इलेक्शन, but again if emergency is there,
then parliament can increase the duration by 1 year. ओके, ये तो इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन की बात हो गई स्टेट लेजिस्लेचर की। बट जो स्टेट काउंसिल है, कुछ स्टेट में जो स्टेट काउंसिल है, इट इज अ कंटिन्यूअस चैम्बर, राइट, लाइक राज्यसभा। राज्यसभा जो कंटिन्यूअस चैम्बर है, उसके हिसाब से ही स्टेट काउंसिल इज ऑल्सो कंटिन्यूअस चैम्बर। इट्स मेंबर्स ड्यूरेशन इज 6 ईयर। उनके जो मेंबर्स है वो 6 ईयर्स, 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। वाइल 1/3 members get retired every 2 years. So 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद वहां पे इलेक्शंस होते हैं। So 1/3 members get retired and 1/3 members will be replaced by the new members. Okay, so this state council, state का जो upper house है, which is also the continuous house, मतलब वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, राइट। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर का है, स्टेट लेजिस्लेचर का 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा। इफ इमरजेंसी इज देयर देन पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय 1 ईयर। 1 ईयर से उनका एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन जो स्टेट काउंसिल है, जो 6 स्टेट्स में है, दिस इज अ कंटिन्यूअस काउंसिल। उनके जो मेंबर्स है, दे आर इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर्स, राइट। 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल्स विल बी रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। 2 साल में हर एक 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे। हर 2 साल के बाद इलेक्शंस वहां पे होंगे। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन, रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल, और उनके साथ कोई डिफरेंस कैसा है वो हम देख रहे हैं, राइट। सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंक्शन। So state council, we have seen the composition of state legislature, composition देखा हमने state legislature कैसा है। So state legislature is made up of 2 houses. If there is 2 houses, that is the state assembly and the state council. Okay, so ये कंपोजिशन है, राइट। सो हाउ दिस स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शंस, ये जो उनकी जो लेजिस्लेचर है वो फंक्शंस कैसे करता है, तो दिस फंक्शंस इज डन विद इन द असेंबली। असेंबली के जो सेशंस होते हैं, सेशंस में मींस मीटिंग, उसमें वो फंक्शंस करती है, राइट। सो इन नेक्स्ट slide we will discuss the functions, sorry, okay, sorry for that. So assemblies met in a session, right. So there are number of functionaries within the state legislature, तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। So what are the functionaries in the state legislature? The first functionary in the state legislature is the speaker of the lower house, which is elected बाय द लोअर हाउस। लोअर हाउस ही अपने खुद के जो चेयरमैन है, लोअर हाउस के चेयरमैन को स्पीकर कहा जाता है, वो इलेक्ट होते हैं, राइट। सो लोअर हाउस इलेक्ट करता है स्पीकर को। दो स्टेट काउंसिल, यहाँ पे हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि स्टेट काउंसिल अपने खुद के चेयरमैन को इलेक्ट करती है, रादर इन कंपैरिजन टू राज्यसभा, वेयर राज्यसभा चेयरमैन इज अ वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे स्टेट काउंसिल के चेयरमैन है, वो खुद स्टेट काउंसिल उन्हें इलेक्ट करती है। सो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द राज्यसभा एंड द स्टेट काउंसिल, राइट। जो अपर हाउस है दोनों के, सेंटर का अपर हाउस एंड स्टेट का अपर हाउस है, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीकर? एज वी नो द स्पीकर इज अ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द, मतलब लोअर हाउस के जो हेड है वो स्पीकर है। अगेन ही मेंटेन्स द डेकोरम,
he maintains the decorum in the assembly. Then एंटी डिफेक्शंस लॉ जो है, ही इज द चीफ इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर. एंटी डिफेक्शन लॉ की जो प्रोसीजर है विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द स्पीकर, राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्पीकर हैज अ पावर टू डिसाइड which bill should be considered as a money bill. So this is most important function speaker does, whether it is in the upper house, state के लोकसभा होगी या स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी स्पीकर को बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है, जैसे कि he maintains the decorum of assembly, he enforces the rules, then again he headed the committees, committee जैसे कि rules committee है, then business advisory committees है और जनरल पर्पस जैसे कमिटीज है. सो दीज कमिटीज एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर, इट इज हेडेड बाय द स्पीकर आइदर एट द सेंट्रल लेवल और आइदर एट द स्टेट लेवल. तो स्टेट का जो स्पीकर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करता है. इफ यू हैव सीन द मेजर कंट्रोवर्सीज, जैसे कि हमने कंट्रोवर्सी देखा कि कर्नाटका असेंबली में जैसे कि स्पीकर का रोल जब डिफेक्शन होता है, मास डिफेक्शन होता है असेंबली में, तो स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो स्पीकर्स रोल इज ऑल्सो गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड ड्यू टू द डिफेक्शन. लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्शंस जो हो रहे हैं, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा, देन वी हैव सीन इन द कर्नाटका आल्सो दैट स्पीकर इज रोल हैज बीन become a very much importance due to the power which has been given under the 10th schedule, that is the anti-defections law. We will discuss the anti-defection law in the separate lecture, but यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीकर का रोल कैसे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है स्पीकर. अगर स्पीकर को रिमूव भी करना है तो he should be given the 14 days notice, right. 14 days notice के बाद ही वो जो असेंबली है वो स्पेशल मेजॉरिटी से स्पीकर को रिमूव कर सकती है. So for the removal of speaker, the resolution should be supported by the special majority. Okay, so this is most important because of the speaker's role has given the most important, as considered as the most important role in the functioning of parliamentary assemblies. Parliamentary assemblies में स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंस इसी वजह से हो जाता है. ओके, तो जहां जहां पे स्टेट काउंसिल है वो स्टेट काउंसिल अपने खुद के चेयरमैन को इलेक्ट करती है, राइट. इट इज इलेक्टेड. ओके, अगर राज्यसभा के से हम एक ये करें कंपेयर विद राज्यसभा, then राज्यसभा is presided by the vice president. Here the chairman of council is elected, right, by the separately by the state council. ये important है. Then again if you see the majority leader, again the majority leader in the lower house is the head of the government, that is the chief minister. चीफ मिनिस्टर ही मेजॉरिटी लीडर होंगे. इफ द चीफ मिनिस्टर केम फ्रॉम द स्टेट काउंसिल से अपर चेंबर से आएंगे तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अनदर मेंबर एज अ मेजॉरिटी लीडर. जो पार्टी जो मेजॉरिटी में है जो पार्टी, वो अपने खुद के एक मेंबर को इलेक्ट करेगी एज अ मेजॉरिटी लीडर. सो he functions to maintain the decorum within the party, to give the representations of state policies. State policies को जो पार्टी की पॉलिसीज है उसको रिप्रेजेंट करना वो मेजॉरिटी लीडर का काम होता है. तो नॉर्मली मेजॉरिटी लीडरशिप इज गिवन टू द चीफ मिनिस्टर, बट चीफ मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ असेंबली के मेंबर जब नहीं होंगे तो ऑब्वियसली द पार्टी विल सिलेक्ट द अनदर लीडर to head as a majority of the party in the assembly. Okay, the next functionary came is the leader of opposition. Leader of opposition is a very important post either in the center or in the state. It is considered as a minority leader. मतलब जो पार्टीज है उनको कम सीट मिली है
तो उसके वजह से इस लीडर को, लीडर ऑफ अपोजिशन को माइनॉरिटी लीडर कहा जाता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अगर देखें, जो जिस पार्टी को 10% सीट्स मिली है टोटल सीट्स में से, उनको मेजॉरिटी लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। लेकिन दिस इज नॉट गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन। उनको मालवनकर रूल कहा जाता है कि वेदर टू गिव टू हुम विच पार्टी। जैसे कि कोalition गवर्नमेंट है, नंबर ऑफ पार्टीज आर देयर, सो उसमें कौन से पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल देना है, तो उसको कैसे डिसाइड करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन एनी, जैसे कि कोई भी उसको मतलब कंडीशंस नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन दैट द पार्टी विच गेट्स द 10% ऑफ सीट, the minority party which gets the 10% of seats of the assembly, that will be given the leader of opposition post. Okay, so this is most important. जैसे कि हमने स्टेट लेजिस्लेचर में देखा, सेंट्रल लेजिस्लेचर में देखा, तो स्टेट लेजिस्लेचर में दिस इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया गया है। सो दिस इज ओनली बेस्ड ऑन द कन्वेंशन कि किस पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन दिया जाना चाहिए। देन अगेन दे केम द व्हीप, ऑफिस ऑफ व्हीप। अगर हमने एंटी डिफेक्शन की बात की, तो दिस ऑफिस ऑफ चीफ इज ऑल्सो कन्वेंशन बेस्ड ऑफिस। कन्वेंशन बेस्ड ऑफिस, इट इज नॉट गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो कुछ कन्वेंशंस होते हैं, फ्रॉम दैट कन्वेंशन द ऑफिस ऑफ व्हिप हैज बीन इवॉल्व। तो मेन फंक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ व्हिप इज टू कंट्रोल द पार्टी एमएलएज। पार्टी के जो एमएलएज है उनको कंट्रोल करना। देन ही सेंड्स द डायरेक्शन टू द पार्टी एमएलएज फॉर द वोटिंग। किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, तो दिस डायरेक्शन वाज इश्यूड बाय द पार्टी व्हीप, दैट इज द चीफ व्हीप। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या कहा गया है, बट the office of VP came under the anti-defection law. What it has said that the whether member of party के जो members है, if he votes against the party, then it is considered as a defection, right? Okay, so defection कहाँ पे हुआ है वो डिसाइड करने के लिए ये ऑफिस है, ऑफिस ऑफ चीफ व्हीप। हर एक पार्टी के, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ऑफिस ऑफ व्हिप बनाती है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के हमने जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का हमने कंपोजिशन देखा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर के जो फंक्शनरीज है वो हमने देखे। देन वी विल डिस्कस हाउ द स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शंस। वो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे फंक्शन करता है वो हम देखेंगे। तो ऑब्वियसली टू फंक्शन लेजिस्लेचर देयर शुड बी मीटिंग, राइट? मीटिंग होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर, जो नंबर ऑफ लेजिस्लेचर है उनकी मीटिंग होनी चाहिए। तो दिस मीटिंग्स आर कॉल्ड एज अ पार्लियामेंट्री सेशंस। पार्लियामेंट्री सेशंस कहा जाता है उन मीटिंग को जो फंक्शन करते हैं, वो बिजनेस डिसाइड करते हैं, राइट? सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेड दैट दिस सेशन there can't be any gap of 6 months within the 2 sessions of assembly। कौन सी भी असेंबली सेशंस में या मीटिंग्स में 6 मंथ्स के आगे का गैप नहीं होना चाहिए। दिस व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज, which means indirectly is that there should be session of assembly for at least 2 times within the year। Okay, but we all know we have 3 sessions। तो 3 बार मिलती है, जैसे कि समर सेशन हो गया, देन बजट है, देन विंटर है, विंटर सेशन। सो दीज 3 टाइम्स असेंबली मीट्स। अगेन स्टेट लेजिस्लेचर भी डिफरेंट 3 टाइम्स मीट करती है। तो वो जो सेशंस होते हैं, वो जो मीटिंग्स होती है लेजिस्लेचर्स की, इट हैज टू बी समन्ड, राइट? उनको बुलाना पड़ेगा ना। ओके, सो दिस समनिंग इज डन बाय द गवर्नर।
गवर्नर उनको समन करता है कि चलो सेशन स्टार्ट करना है, यू शुड केम हियर एट दिस लोकेशन, राइट। सो उनके कैपिटल है, हर एक स्टेट के कैपिटल में असेंबली हॉल रहता है, तो वहां पे गवर्नर उनको समन कर देगा, राइट। दो दिस समनिंग ऑफ मीटिंग, इन्विटेशन ऑफ मीटिंग इज डन बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनके एडवाइस पे ही गवर्नर समन कर सकते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, बट अरुणाचल प्रदेश द गवर्नर हिमसेल्फ हैज समन द असेंबली। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर के एडवाइस को इग्नोर किया और असेंबली को बुलाया, समन किया। तो कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो इसलिए देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज विद इन द स्टेट। ओके, तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गवर्नर हैज नॉट एनी डिस्क्रिशनरी पावर, वो अपनी खुद की पावर नहीं यूज कर सकता टू समन द असेंबली। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग अंडर द अरुणाचल प्रदेश में जो रूलिंग हुई थी वो इंपॉर्टेंट थी इसलिए, राइट। तो द सेशन इज समन बाय द गवर्नर, सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर समन हो गया, ओके, समन, देयर इज अ सीटिंग, लेकिन उसके वो जो सीटिंग्स है सेशंस की, उसमें कुछ रिसेस पीरियड होता है कि जैसे कि एडजॉर्नमेंट, उसको कहा जाता है एडजॉर्नमेंट, मतलब सीटिंग को 1 आवर के लिए या 1 डे के लिए सीटिंग पे स्टे लाया जाता है, राइट। सो इट कैन बी कंटिन्यूड आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ओके, उसको कहा जाता है एडजर्नमेंट। इट मीन्स सस्पेंशन ऑफ सीटिंग और सेशन। अगर मतलब कोई काम हो जाए या कोई खाना खाने के लिए लंच ब्रेक हो जाए तो ऑब्वियसली सीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। या कोई डे का वर्क हो जाए तो रात में घर जाने के लिए, अगले दिन सुबह वापस आने के लिए द सेशन हैज टू बी एडजर्न, विच इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज द स्पीकर। स्पीकर क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए सेशन को एडजर्न कर देते हैं, मतलब सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद एक या आवर के बाद या एक 24 घंटे के बाद आप फिर से वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, उसको एडजर्नमेंट कहते हैं। तो एडजर्नमेंट सेशन को खत्म नहीं करता, इट नॉट स्टे ऑन द सेशन को खत्म नहीं करता एडजर्नमेंट, इट ओनली सस्पेंड्स द सीटिंग। सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन ये एक प्रोसीजर है विच ये सेशन को, पार्लियामेंट्री सेशन को, प्रोरोगेशन पार्लियामेंट्री सेशन को खत्म कर देता है, विच स्टॉप्स दैट पर्टिकुलर सेशन, मीन्स सेशन अभी एंड हो गया। सो विच इज डन बाय द प्रोरोगेशन, राइट। सो प्रोरोगेशन कौन करता है, विच इज डन बाय द गवर्नर। सेशन को बुलाने के लिए he can summon the session as well as he can end that particular session. So governor has the most important, but this is used on the advice of council of ministry. This power has to be used by the governor on the advice of council of ministry, right. ये important चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। Okay, so then we will move to the dissolution. जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, जो लोअर हाउस, अपर हाउस तो डिसॉल्व नहीं होता, दैट अपर हाउस कैनॉट बी डिसॉल्व, इट इज अ कंटिन्यूअस चैम्बर। ओके, जो लोअर हाउस, स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है, it has a duration of 5 years. So dissolution is done either automatic means automatic
ये होता है कि 5 साल का स्टेट असेंबली का जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दैट हाउस विल बी डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, राइट। बट डिसोल्यूशन इज ऑल्सो डन बाय द गवर्नर। गवर्नर भी डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। So this is also important. Governor can dissolve the lower house also on the advice of council of ministry, right? So dissolution दो प्रकार के होते हैं, either is automatic dissolution और dissolution by the governor. So ये चीजें importantly हमें ध्यान में रखना है. Then again this is a co function. तो session तो start हो गया, session has started. So how to start? So constitution has given some requirement to start the session, right? Constitution has placed some requirement to start the particular session, which is called, so to start the session there should be minimum number of MLAs should be present, okay. So ये जो minimum number है, it has been called as a quorum होनी चाहिए. So constitution state that there should be 10% of members should be present to start the session. मतलब आपका जो 500 का स्टेट लेजिस्लेचर होगा तो ऑब्वियसली देयर शुड बी प्रेजेंस 50 MLAs वहां पे होने चाहिए टू स्टार्ट द सेशन ऑफ द असेंबली, राइट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द सेशन. सेशन कैसे होता है लेजिस्लेचर का, उसको समन किया जाता है लेजिस्लेचर को, देन एजेंडा लिया जाता है, देन एडजर्नमेंट मोशन इज देयर, देन प्रोरोगेशन होता है सेशन का, देन द असेंबली शुड डिसोल्यूशन भी होता है असेंबली का, देन द कोरम इज देयर, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ MLAs शुड बी देयर टू कंटिन्यू विद द सेशन, राइट, टू स्टार्ट विद द सेशन. ओके, तो ये है कि सेशन में बैठ गई असेंबली, राइट. व्हाट वी हैव सीन इज द composition and assembly, how the assembly functions and the functionaries, right. functionaries को हमने देखा. then we will discuss the process को हम डिस्कस करेंगे. as assembly की main functions क्या है, what is the function of assembly is to maintain the executive accountability, right. executive accountability को maintain करना, again to pass the laws को pass करना, या जो budget है उसको sanction करना. So these are most important function of the assembly, okay. So we will discuss the important function of the assembly. First we will discuss how state legislature passes its ordinary bill. ordinary जो bill है, मतलब कोई लॉ बनाना हो या कोई इंस्टीट्यूशन बनानी हो तो उसके लिए एक बिल पास करने चाहिए, राइट. तो उसको कैसे, उसके लिए कैसे फंक्शन होती है असेंबली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल है आइदर सिंगल मेंबर होगी, मतलब सिंगल लेजिस्लेचर होगा, तो बिल वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो फर्स्ट रीडिंग हो जाती है यहाँ पे. सो दिस इज अ 3 stages. 2 stages are there to pass the bill. First is the first reading, second stage is the second reading, and third stage is the third reading. If you remember the lecture we have taken, how the Central Legislative Assembly functions, the same procedure has been followed here. First reading होती है, यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी बिल होगा तो उसको पास करने के लिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, राइट, टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर बिल इन द असेंबली. ओके, असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस होगा आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट मेंबर. मतलब जो प्राइवेट मेंबर है, जो मेंबर्स है विच आर नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल. ओके, तो इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट रीडिंग में. फर्स्ट रीडिंग को हम देख रहे हैं, राइट. देन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, देन अगेन इट इज पब्लिश्ड
इन द गैजेट, गैजेट में पब्लिश होता है. सो दिस इज 2 stages. अगेन इन द सेकंड रीडिंग स्टेज, सेकंड रीडिंग स्टेज में क्या होता है, द असेंबली विल आइदर refer bill to the parliamentary committee. पार्लियामेंट्री कमिटी में बिल रेफर कर सकती है. आइदर, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी, राइट. असेंबली can refer the bill to the parliamentary committee for proper evaluation or to the joint committee. मतलब अगर अपर हाउस होगा तो उसके साथ एक जॉइंट कमिटी बिठाएगी तो उसके भी रेफर कर सकती है. और क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होता है. क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग इज देयर इन द सेकंड रीडिंग, राइट. सेकंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होता है एंड देन द मेंबर ऑफ असेंबली कैन प्रपोज द अमेंडमेंट एट द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज में एमएलए जो होते हैं वो क्लॉज बाय क्लॉज जब रीडिंग हो रहा है तो वो अपने खुद की अमेंडमेंट दे सकते हैं, राइट. और उसके बाद जो कमिटी से जो मतलब कमिटी के बिल पास हो गया, कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दी है वो भी कंसीडर की जाती है इसी स्टेज पे. ओके, देन द थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग उसी हाउस में कहा होती है. यहाँ पे नॉमिनल डिस्कशन होता है. यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट पास नहीं की जाती. अगेन द थर्ड रीडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर वोटिंग टेक्स प्लेस. थर्ड रीडिंग पे वोटिंग होता है उस बिल पे, राइट. तो उसके बाद ही अगर बिल पास हो जाए इस 3 स्टेजेस पे तो बिल गेट देन ट्रांसफर्ड टू द सेकंड हाउस. सेकंड हाउस में ट्रांसफर किया जाता है, राइट, उस बिल को. ओके, अगर सिंगल मतलब बाइकैमरलिज्म नहीं है, सिंगल लेजिस्लेचर है तो बिल विल गो टू द गवर्नर्स असेंट. इफ गवर्नर इज गिवन द असेंट देन बिल विल बिकम अ लॉ. यहाँ पे अगर सेकंड हाउस अगर होगा मतलब स्टेट काउंसिल होगी तो यहाँ पे भी 3 स्टेप की प्रोसीजर फॉलो की जाती है. मतलब इंट्रोडक्शन होता है, देन फर्स्ट रीडिंग विल बी देयर, देन सेकंड रीडिंग विल बी देयर एंड थर्ड रीडिंग विल बी देयर. सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ अ ऑर्डिनरी बिल, राइट. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेट असेंबली ने अगर 3 स्टेजेस में बिल पास कर दिया and it get transferred to the state council, so state council can either reject that bill, right, or propose amendment to that bill and send it back to the state assembly, or can pass that bill. Okay, or it doesn't function, it doesn't take any action on that particular bill, right. Okay, अमेंडमेंट पास कर दिया अगर स्टेट काउंसिल ने तो स्टेट असेंबली आइदर कैन एक्सेप्ट दैट अमेंडमेंट और रिजेक्ट इट, राइट. पास कर दिया अगर स्टेट काउंसिल हैज पास दैट बिल देन दैट बिल विल गिव टू द गवर्नर्स असेंट. गवर्नर के असेंट के पास जाता है वो बिल. और अगर स्टेट काउंसिल ने कुछ ये एक्टिविटीज नहीं की मतलब नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 3 months, राइट, तो सेंटर में क्या होता है, दैट विल गो फॉर अ जॉइंट सिटिंग. प्रेसिडेंट विल कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग, बट दिस जॉइंट सिटिंग प्रोविजन इज नॉट देयर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जॉइंट सिटिंग की परमिशन नहीं है. सो this joint sitting provision is not there within the state assembly, right. So what state assembly will do, again pass that bill and will transfer to the state council. Okay, so पहले तो 3 month हो गए, फिर उसके बाद 1 month जाएगा. अगर भी स्टेट असेंबली ने कोई एक्शन नहीं लिया तो दैट बिल इज कंसिडर्ड एज अ पास्ड. ओके, सो state council can delay the bill only for 4 months at the state. यहाँ पे अगर हम राज्यसभा से कंपेयर करें तो राज्यसभा से अगर
कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो जॉइंट सिटिंग होती है। तो राज्यसभा हैज अ वेरी लार्ज पावर इन कंपैरिजन टू स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल की अगर कंपेयर करें राज्यसभा से इन द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल, सो स्टेट काउंसिल कैन ओनली डिले फॉर 4 मंथ। जो ऑर्डिनरी बिल है उनको सिर्फ 4 मंथ के लिए डिले कर सकता है स्टेट काउंसिल, लेकिन राज्यसभा जो है वो जॉइंट सिटिंग के लिए फोर्स कर जाएगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन इफ यू सी द डिफरेंस इन द पासिंग ऑफ मनी बिल की अगर पासिंग की बात करें तो इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद द गवर्नर्स रिकमेंडेशन, prior recommendation of governor to required to introduction of bill which is in the lower house. अगर आपके पास एक ही legislature chamber होगा तो there is a no problem, but if you have a council then this bill should be introduced in the assembly. lower house में उसका introduction होगा with the recommendation of governor, right? so ये important चीजें हैं। तो state council के पास यहाँ पे उस बिल को पास करने के लिए या बिल को पास करने के लिए सिर्फ 14 डेज पीरियड आते हैं। ओके, सो स्टेट काउंसिल हैज अ लिमिटेड पावर राइट हियर। ही कैनॉट अमेंड दैट बिल। मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती स्टेट काउंसिल। अगेन इट कैनॉट रिजेक्ट दैट बिल। मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती स्टेट काउंसिल। सो इट हैज ओनली लिमिटेड पावर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। सो स्टेट असेंबली ने बिल पास कर दिया तो 14 डेज के बाद कोई एक्शन नहीं लिया तो बिल इज कंसिडर्ड एज अ पास्ड बाय द बोथ असेंबली। सो उसको अमेंडमेंट का भी पावर नहीं है और रिजेक्शन का भी पावर नहीं है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर स्ट्रक्चर। स्टेट असेंबली के पास ऑर्डिनरी की बिल्स के हिसाब से कौन से पावर है, देन स्टेट काउंसिल के पास ऑर्डिनरी बिल के हिसाब से कौन से पावर है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद मनी बिल्स के लिए भी स्टेट काउंसिल हैज अ वेरी लिमिटेड पावर इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। राज्यसभा आल्सो हैज अ वेरी लिमिटेड पावर, बट स्टेट काउंसिल बहुत ही कम पावर है आइदर इन द ऑर्डिनरी बिल और आइदर इन द मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल में अगर हम देखें तो स्टेट काउंसिल कैन डिले द ऑर्डिनरी बिल फॉर 4 मंथ ओनली, राइट। और जो मनी बिल है वो 14 डेज में उसे पास करना ही करना है। सो आफ्टर द पासिंग ऑफ बिल देन बिल विल गो टू द गवर्नर। दोनों असेंबली ने पास कर दिया तो गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर कैन गिव हिज असेंट एज वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट और ही कैन सेंड इट फॉर अ रिकंसिडरेशन or he can reserve that bill for the presidential consideration। president के consideration के लिए भी गवर्नर उनको रिजर्व कर सकता है। so this is important procedure of the functioning of a legislative assembly। as we have seen the legislative assembly कैसे बनती है, then what are the main functionaries of legislative assembly, what is the composition of legislative assembly, and what is the how the legislative assembly functions, जैसे कि function कैसे करती है। then we have seen the procedure of legislative assembly, मतलब legislative assembly कैसे bill pass करती है, whether it is a money bill or whether it is an ordinary bill, right? so okay, for this we will conclude the today's lecture. in the next lecture we will discuss the judiciary। पॉलिटी में जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जुडिशरी अगर हम देखें तो जुडिशरी हैज नंबर ऑफ इनोवेशन हैज बीन डन इन द जुडिशरी। ओके, तो जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आइदर इफ यू से द प्रीलिम्स के हिसाब से भी, आइदर यू कैन से विद द मेंस के हिसाब से भी, राइट। इफ यू सो विल स्टार्ट द जुडिशरी और डिस्कशन रिगार्डिंग द जुडिशरी फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो if you have any doubt please ask me, and if you want to get subscription in the Unacademy please use my referral code, that is the Aniket। for your subscription you will get a 10% of discount। so thank you for joining. We will meet in the next lecture, that is a
to discuss the Indian judiciary, right? Okay, thank you.